नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है मित्रों, सब सही हो ना। अच्छा, तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ और आज मेरे साथ है अलबीना। और अलबीना रसिया से हैं और यहाँ पर आज टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप थी इनकी, और जो ब्रिटिश काउंसिल यूके की तरफ से थी और बर्मिंघम में, तो वो इन्होंने वर्कशॉप जस्ट फिनिश की है। और ये टीचर हैं, मैंने जैसे अभी बताया, ये टीचर हैं आइल्स की। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इनको आपसे ज़रूर रूबरू कराऊं। और कारण ये है कि अक्सर मैसेज पूछते हैं या आते हैं लोग, ये बहुत ही बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है आइल्स के बारे में। आइल्स के लिए प्रिपरेशन क्या करनी है, आइल्स के में अक्सर बच्चे क्या कमियां कर देते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगा अलबीना से। ओके अलबीना, please share some light on the examination of IELTS. Oh, the exam is very popular, and the reason why it is so popular is that it is recognized all over the world. If you need to go to university where the language of education is English, you have to provide your English competence, and you need to take an IELTS. If you want to emigrate, move to another country, you have to take IELTS. So without IELTS, you just stay in your own country. जैसे सिर्फ एक आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो आइल्स की ज़रूरत नहीं है, और आपको इमिग्रेशन होना है, जॉब होना है या स्टडी के लिए जाना है, तो सभी जगह सभी कंट्रियों से आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो अलबीना ने बताया। तो ओके अलबीना, would like to share some tips with our viewers. Well, tip number one, I would say follow the instructions. Never start any exercise, never start any task before reading the instructions carefully. A common mistake is in the instructions it says fill in one word, and students sometimes come up with a two-word answer. So tip number one is follow the instructions and never give up. Tip number two is there is no negative marking, which means if you give a wrong answer, you're not going to be losing any marks. So never leave any answers blank. If you don't know the answer, just guess. Give any answer, and it will be your educated guess. And trust me, in many cases, a guess is the right answer. So these are two main tips that I would give to students who want or need to take an IELTS. For more tips, contact me directly. Yes. तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया चीज़ बताई है। जो हमारा राइटिंग का पेपर होता है उसमें बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, बहुत से दोस्त ये गलती कर देते हैं कि उसको एक वर्ड में आंसर देना होता है और वहाँ 2 वर्ड में 3 वर्ड में आंसर दे देते हैं, वो बहुत गलत है। दूसरा, गिव अप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेगेटिव पॉइंट है नहीं कि आपका गलत हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, उसको कभी भी खाली मत छोड़ के आओ। आप उसमें गैस करो यार, आइडिया लगाओ, कुछ भी भर के आओ, खाली नहीं छोड़ना है। तो ये 2 टिप्स जो रिटन एग्जाम की है बहुत अच्छी है, इनको रखना। एंड अलबीना, व्हाट अबाउट स्पीकिंग टेस्ट? Oh, when you're taking speaking part of IELTS test, it is very important never stop speaking. Sometimes students give a one-word answer, a two-word answer, and they stop. You should never stop. If you don't know the answer, if you don't know what to talk about, for example, they're asking you about what's the favorite present that you ever got, invent an answer. They're not interested in your real answers. They are interested in your language skills. It is okay to invent answers. If they're asking have you ever been to a museum, and you cannot answer, no, I haven't. But you can invent something. Even if you have never been to a museum, yes, you can say, I have never been to a museum, but I
I would like to go to a museum. I've heard lots of things about museums that they can be very interesting. So my dream is to visit British Museum. In this way, you will be demonstrating your language proficiency. But if you give just a one-word answer, yes, no, you are not demonstrating anything. बिल्कुल. तो दोस्तों, जब हमारा स्पीकिंग का टेस्ट लेते हैं तो उसमें ये बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है कि आपसे कोई आंसर पूछा है कि आप कभी म्यूजियम में गए हो, तो बहुत लोग कह देते हैं नहीं. तो सिर्फ नहीं एक जवाब नहीं है हमारा. वो आपसे, दरअसल जो टीचर है वो आपसे आपकी स्किल, लैंग्वेज की स्किल जानना चाहता है. वो आपका एक्चुअल आंसर नहीं जानना चाहता कि आप गए हैं, आपने कह दिया नहीं, तो आपकी तरफ से ये कि हाँ यार मैंने तो नहीं कह दिया. नहीं, वो आंसर बिल्कुल गलत है. आपने कंटिन्यू बोलते रहना है, आपने एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को, अपनी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना है, अपनी वोकेबुलरी को एक्सप्लेन करना है. तो सिर्फ 1 वर्ड या 2 वर्ड का आंसर नहीं देना, आपने कंटिन्यू रहना है. यार बोलना है बस, कुल मिला के ये आपने बोलना है. Another tip about speaking I would like to give is listen to your teacher, to your examiner very, very carefully. If they start the question asking, do you like something, you should answer, yes, I do. If they are asking, have you ever been, you should ask, yes, I have been. No, I have never been there. Listen to the questions carefully. How do they start the question? And answer accordingly. Then, Albina, how is marking system? Well, the maximum you can get is band 9. But usually there are no organizations that would require band 9. Most of the organizations start with band 5.5, 6, 6.5. If you want to go to do master's degree, then you will need 7, 7.5. And I think for doctor, you need For doctors, you need higher. You probably need 8. 8. But you will know, everybody, you know what for you need IELTS, and you need to find out what score minimum you need. Usually they say that if your current score is, let's say, 5.5, and if you need 6, then usually it takes about half an hour of intensive work to go half a point up. And who are your students? Oh, I have students of all sorts of students. Some are young as 16, 17. Some can be more than 30 or even 40-year-olds. And they come from all over the world, from all different countries, as I teach online. Not only face-to-face, but I also teach online. Okay. So there is no limit. And what score your student gets achieved? They achieve? Oh, they usually get what they want, and you have to be realistic. You can't really expect that there is a teacher who will get you all the way up to band 9 like within a month's time. It takes a lot of time to prepare for IELTS. So the highest my students got was a very bright Russian girl who was very intelligent and very hardworking. She got 8.5. 8.5. Yeah. My own daughter who took IELTS got 8. 8. Yes. But many students don't need 8. They're happy with 6, 6.5, and they get what they want. Good. तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि आपको बैंड देख लेना है, आप किस पर्पस के लिए आप आइल्स का टेस्ट दे रहे हैं और आपको क्या बैंड रिक्वायर है. आपको 5.5 भी चाहिए, 6 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, तो वो चीज़ सबसे पहले मस्ट है. आप उसी के हिसाब से तैयारी करोगे. और कैन यू टेल योर वेबसाइट एड्रेस और ईमेल और फेसबुक? Oh yes, you can find me on Facebook and
you can contact me directly. My name is Albina Krasnova. So तो दोस्तों अल्बीना का ईमेल आईडी और मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली अल्बीना से कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये शाम तो थी अल्बीना के साथ और आपके आइल्स के नाम। अगली शाम देखते हैं किसके साथ आती है। तो जय हिंद अल्बीना, जय हिंद। Jai Hind.